Study, the very first chapter was about the electrostatics. The charge is in rest. The charge is in rest. But here, the charge is in motion. तो क्या बोलो? देखिए, जब तक आपका चार्ज रेस्ट में है, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जैसे ही चार्ज मूव कर गया, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी. बट सर जी, मूवमेंट ऑफ चार्ज is of two types. The movement of charge is of two types. Inside the conductor, charge having one type of motion, that is random motion. Like this. This kind of motion is said to be random motion. This random motion not causes the electricity. This random motion not causes the electricity. Electricity caused by a unidirectional motion of the electrons. Electricity not caused by this kind of motion, zigzag motion or the random motion. Electricity caused by this kind of unidirectional motion. And this unidirectional motion is obtained when we offer any source of potential difference to the conductor. When we offer any source of potential difference to the conductor, then only the unidirectional flow of current, flow of electrons take place. This unidirectional motion of electrons causes the electric current. Okay, बाबू लोग? So very simple. What is electric current? We simply know the rate of flow of charge is known as electric current. The rate of flow of charge is known as electric current. अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? We start the electronic theory of the electric current. कि how the electron move, how electron behave during the electric current, how the electron behaves during the electric current. Okay, sir? Sir, we have this kind of any conductor is connected any source of potential difference. This Paulo, this symbol stands for cell. Combination of cell is battery. Cell or battery is a source of potential difference. And one thing you can note down, this source of the DC current, DC voltage, direct current, not the alternating. Okay, sir ji? So, sir ji, here various electrons are present. Free electrons through the metal surface. They are loosely bounded with the nucleus. As the positive terminal of battery, attract these electrons, then electrons start to move towards the positive terminal of the battery. Here the terminal is positive, so sir, this one positive, this one negative, this one negative. So here plus to minus electric field has created. An external electric field has created that is acting from plus to minus. Under this electric field, electrons are moving in this direction. It means opposite to the applied external electric field. Electric field this side, electrons are moving towards this side. So electric field and the electrons are just reverse, just opposite to each other.
ओके सर, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने कि ऐसे जा रहे हैं, ये एकदम ऐसे भी नहीं जा रहे सब लोग, ये अपना आपस में रैंडम भी कर रहे होंगे, फिर आगे बढ़ रहे होंगे, रैंडम करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसे रैंडम कोलिजन फिर आगे चलना, ऐसे मोशन हो रहा होगा अपने स्थान पर ही, ऐसे ऐसे रैंडम और फिर आगे बढ़ते रहेंगे, नॉट सिंपली स्ट्रेट अवे। सो इनको आपस में ऐसे रैंडमली कोलाइड करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सर जी कोलाइड करते रहेंगे, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एंड बैटरी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दिस काइंड ऑफ मोशन of electron is known as drift. This is called drift velocity. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को मोशन मिला है, the velocity acquired by electron under this electric field is known as drift velocity. So this drift velocity of electrons causes the current. This random motion not causes the current. Sum of all the random motion is equal to 0. What causes current? So that is the drift velocity. Class clear? So drift velocity is responsible for the flow of current through the conductor. Class clear? That drift velocity बोले तो unidirectional motion of electrons. Drift velocity बोले तो unidirectional motion of electrons causes the electric current. Okay, so all of you now write heading drift velocity. Write all of you heading drift velocity and write the average velocity acquired by electrons in the opposite direction of the applied external electric field is known as drift velocity. Is known as drift velocity. ओके सर जी, सो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, आपस में रैंडमली कोलाइड होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय बी सफिक्स डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रैंडम कोलिजन के साथ साथ यूनिडायरेक्शनल मोशन। नाउ राइट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Expression for drift velocity. Sir, by first equation of motion, we know V is equal to U plus AT. Here V stands for V drift. Sir, drift velocity is the unidirectional motion of electrons. Okay, sir. But sir, as we apply the battery to the conductor, then only the drift take place. Otherwise, no drift, only the random collision. So as we offer the battery a source of potential difference, then only the drift take place. So for drift, before applying the battery, the initial velocity is 0. So for drift, U equal to 0. Plus A into T. So VD is equal to AT. VD is equal to here, A is the acceleration. Acceleration of a charged particle inside the electric field. That is, A is given by QE upon M. The acceleration of charged particle inside the electric field.
A is equal to QE upon M. This we know कि भाई F is equal to MA applying this force caused by F is equal to QE. So both are the value of F. So MA is equal to QE. So A is equal to QE upon M. And for electron, Q can be written as E. For electron, Q is treated as E for the charge of electron. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So acceleration A is written as E upon M. Written as E upon M. It is the acceleration of charged particle inside any electric field. So A is equal to E upon M. Now certainly into T. T is the time. अच्छा, ये वो टाइम है in which the electron experiences the electric force and start its motion, accelerated. तो सर देखिए ऐसा ना, इलेक्ट्रॉन में ऐसे धूम धड़ाम ऐसे करके टक्करें हो रही हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. तो सर एक कोलिजन हो गया, जब तक दूसरा कोलिजन होगा द इलेक्ट्रॉन इज इन रिलैक्स पोजीशन, इन द मूड ऑफ रिलैक्स. तो एक टक्कर हो गई, रिलैक्स है, धड़ाम, एक और टक्कर हो गई. तो बिटवीन एनी टू कोलिजन द इलेक्ट्रॉन इन द मूड ऑफ रिलैक्सेशन. तो दो टक्कर के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. द टाइम गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as relaxation time. That is the time in which the electron accelerates itself. So here time t is denoted by relaxation time. This time denoted by tau. Here tau stands for the relaxation time. जो क्लास 11th में देते थे आप लोग, सिंबल ऑफ टॉर्क, वो वाला टाउ यहाँ पे होता है. So Vd is equal to E tau upon M. So this is the expression for the drift velocity. अब एग्जाम में आता है ड्राइव करने को. So drift velocity Vd is equal to E tau upon M. Here E charge of electron, capital E applied external electric field. बाबू लोग ये वाला E इस V से दिया जाएगा, इस वाले E के लिए ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल होगा. And tau is the relaxation time between any two collision. This tau affected by the temperature. As we increase the temperature, the electrons start to collide more randomly. तो जल्दी जल्दी collide करते हैं तो ये tau बढ़ जाता है. Tau is affected by the temperature. As we increase the temperature, the kinetic energy of electron get increased. ये मैंने क्लास 11 पढ़ाया था आपको. एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल गिवन बाय 3/2 kBT. Here kB is the Boltzmann constant and T is the temperature. So as we increase the temperature, the kinetic energy of electron get increased. So electron energy get increased. So sir जी, this relaxation time tau get decreased. तो सर Vd इन पे डिपेंड करता है. Vd is equal to E tau upon M. Okay, आप बोलो, you can note down to this one. Sir ji, let the length of conductor be L, area of cross section be A. Let the length of conductor be L and the area of cross section be A. Okay. Now write heading. Relation between current and drift. Write heading. Relation between current and drift. ओके सर. अब देखिए हमको क्या करना सर, यहाँ पे Vd एंड I. सर इसको रिलेट करना है, करंट को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करना है.
ओके सर, अब देखिए ऐसे कर लेते थोड़ा सा। वी नो इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. Q is the charge, total charge, and T is the time. Let this one equation first. I is equal to Q upon T. सर मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं, आप लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके सर जी, चार्ज Q इक्वल टू, सर ये चार्ज कितना होगा? सर जी आई कैन राइट चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू के वॉल्यूम। चार्ज कैन बी गिवन एज चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देख क्या होता है चार्ज डेंसिटी? चार्ज एट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इनटू के वॉल्यूम, इट मींस चार्ज। तो सर जी चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी को सर शो करेंगे आप लोग NE से। NE बोले तो चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे N क्या होता है? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इनटू E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। So this total equal to charge density, the charge present at the per unit volume of conductor is equal to NE. So Q equal to NE into volume. So sir जी Q is equal to NE. सर जी into volume. सर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सर हमने माना है एरिया ऑफ बेस इज A and height is length L. So here volume equal to area of base into length. Equation second. And time. The time T equal to distance upon speed. Time is equal to distance upon speed. Speed having drift velocity VD. जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है सर जी वो ड्रिफ्ट से हो रहा है। दे हैविंग स्पीड इक्वल टू ड्रिफ्ट। सो टाइम T इक्वल टू L अपॉन VD, इक्वेशन थर्ड। सर जी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड द वैल्यू ऑफ T and Q we can replace in first. So from first, second and third I is equal to Q upon T. Sir Q is equal to NEAL upon T is equal to L upon VD. तो सर देखिए थोड़ा सा L से कैंसिल हो जाएगा। I is equal to NEAVD. This is the relation between current and drift velocity. I is equal to NEAVD. Very, very important expression. डन सर जी। सर करंट I किससे बनता होगा? तो I बनता है N से। N क्या है? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके तो I इक्वल टू N, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A no resistance is inversely proportional to area. तो अगर एरिया होगा तो रजिस्टर ये VD। सर आपने सुना है एक वर्ड होता है डोपिंग। सर डोपिंग कहते हैं, ये जो हमारे एथलीट होते हैं ये लोग डोपिंग करते हैं।
तो डोपिंग मीन्स सर जी टू इनहेंस द इफिशियंसी, टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डोपिंग। तो सर ऐसे हमारे पास होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर आर पुअर कंडक्टर। तो सर जी वी कैन मेक द सेमीकंडक्टर एज अ गुड कंडक्टर ऑल्सो बाय डूइंग द डोपिंग। डोपिंग से क्या होता होगा सर? डोपिंग से ये वाला एन बढ़ जाता है, नंबर डेंसिटी। डोप तो उससे करंट बढ़ जाता है। ये जो सेमीकंडक्टर, इनमें सर हम डोपिंग करते हैं। आपने शायद कहीं पढ़ा होगा कि 14 ग्रुप में 13 ग्रुप और 15 ग्रुप को मिलाकर वी कैन डू द डोपिंग on the basis of that p type or n type semiconductor are formed. These are the doped semiconductor. Doping means what is the meaning of doping? So by doping we increase the electron density, the number of free charge carrier in a given conductor. So by increasing the number density of electrons we can increase the current. This task simply known as doping. इसलिए डोपिंग की जाती है। ओके सर। तो सर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ करंट इज आई इज इक्वल टू NEAVD। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। सर देखिए जहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं बाबू लोग, ओम्स लॉ इज वेरी वेरी फंडामेंटल। Without Ohm's law, we can't handle the current and voltage. So in order to handle the current and voltage, Ohm's law is must. So now write heading Ohm's law. Okay sir जी। सर आपसे कहा जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो सर वेरी सिंपल कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. In reverse way you also can say कि what is Ohm's law? If the physical condition of conductor remains same then the potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the current flowing through it. Both are okay. Okay, but as per the statement we write V proportional to I, not I proportional to V. It is called Ohm's law. V proportional to I. So this line is Ohm's law. V proportional to I. Okay sir. Now we have to discuss this Ohm's law. We have to discuss this Ohm's law as per the electronic theory on the basis of drift velocity. Okay class. So now we know that, as we know that I is equal to NEAVD. As per the drift, this is the electric current. I is equal to NEAVD. So I is equal to NEAVD बोले तो E tau upon M. That is the drift velocity. VD is equal to E tau upon M. Okay sir. So I is equal to NE into E square, that is I. Okay sir. सर नाउ ना देखिए क्या करा हमने, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A tau upon M. Okay class. सर जी in place of this E we know relation between electric field intensity and electric potential. और ध्यान है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V upon L. Relation between electric field and potential E is equal to V upon L. So I is equal to NE square A tau upon M.
V upon L. चलिए पुट कर आपने इन प्लेस ऑफ E. E has replaced here by V upon L. Okay class. Now चलिए यहाँ थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ऊपर वाली लाइन देखिए कितना रफ कर लेते हैं. सर जी फ्रॉम हेयर I A tau V upon ml. सर ये V ये वाला यहीं पे रहा, ये I को आपने अपॉन करा V अपॉन I, और जितना सर मालताल है इधर भेज दीजिए आप लोग. तो V अपॉन I इज इक्वल टू सर यहाँ आ गया आपका ml अपॉन n स्क्वायर A tau. सर जी if the physical condition of conductor remains same, then mass already constant, length at given temperature remain constant, n constant, E constant, A constant, at given temperature tau also constant. So sir ji this whole equal to constant. So I equal to constant और इधर भेजें I को तो V proportional to I. अगर हम यहाँ से कॉन्स लॉ स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो इफ द फिजिकल कंडीशन मीन्स दिस होल ml upon n square 8 tau refer to the physical conditions of conductor remain constant, remain same, then voltage proportional to current. Tau into I. B, sir, this one whole equal to constant into I. Here this constant ml upon n square A tau refers to the resistance. So we can write here C is R. So V is equal to sir ji RI. V equal to IR. Sir ji, in this way, with help of drift velocity, we can define to the Ohm's law. What is the resistance of the conductor? Sir, actual line is resistance belong to wire, not to the conductor. Okay, sir ji. Now resistance. Sir, here, as we know, the constant ml upon n square A tau. The constant ml upon n square A tau is equal to resistance here. So these are the physical condition, means length, area of cross section, and the this reaction time. This can be affected by temperature. Okay. So here R is equal to ml upon n square tau into A. Sir, if the physical condition of conductor remains same, then M already constant, N constant, E already constant. Sir, tau, this tau relaxation time also remain constant when the physical condition are remain same. So this equal to constant. So we can write R proportional to L upon A. Resistance depend upon length and the area of cross section of the wire. Resistance R
proportional to L, R proportional to 1 upon A.